Okay guys, welcome to the revision lectures part 1. Today we are going to do the revision of surds. Okay, what does surd mean? So surds is any rational number under an unsolvable root. What does this mean? So basically, by this time you should know okay, what is the difference between a rational number and an irrational number. So surd is basically a subtype of an irrational number. For example, root 3. Now, root 3 is a rational number, which is the first criteria, and it is under an unsolvable root. That is, by normal algebraic methods, you cannot find the value of the root 3. So, root 3 is a surd. Okay, root 5 is a surd. Root 4, which can be solved and written as 2, is a rational number. Okay, root pi. Now see, this is very interesting number. Pi is not a rational number. Pi itself is an irrational number. So since the first criteria is not being met, it cannot be a surd. So it is just an irrational number. So I hope it is very much clear that what a surd actually is. Now, certain rules of surds. Rules of surds for addition and subtraction. First rule, that two different surds or irrational numbers cannot be added or subtracted. अब ये काफी इंटरेस्टिंग फंडा है. If you want to really understand the rules of this, you need to of surds like addition subtraction, start treating them like variables और chocolates. Okay, तो chocolates की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल variables की तरह. Let's say for example I have example 1 root 3 plus root 5. अब अगर मैं root 3 को x कह दूं और मैं root 5 को y कह दूं, then x plus y algebraically is not possible till the time I actually know their values. हाँ, आप कैल्सी में डाल के तो आंसर ले लोगे, लेकिन by non calci methods you cannot find its value. So this is not possible algebraically. Okay, similarly it can be like a rational number with root 5, again not possible to add. Even for subtraction for that matter, 3 minus root 6, again not possible. So now the question is, sir, हम कब इसे add कर सकते हैं? Okay, so two same roots can be added or subtracted. Very simple. जैसे for example, if I write root 2 plus root 2, so that comes as 2 root 2. It's possible. जैसे कि इसको x गिनूं तो this is also x and x plus x is nothing but 2x. So जैसे ही आप इसको वेरिएबल दे देते हो, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं.
बिकॉज वेरी अब तक तो बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो अब तक तो इट हैज बिकम वेरी क्लियर टू यू गाइस के कौन से लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी ऑल्सो लाइक √3 plus √3 is 2 √3. It can also be like 5 √3 minus 2 √3. So this can be written as 5x. This can be written as 2x, which gives me 3x. तो इसका आंसर आ जाता है 3 √3. Now when I say that two same roots can be added, तो ऊपर वाले में और एक एग्जांपल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल if I write square root of 3 plus cube root of 3. Now this is also not possible. You cannot add it. Understand? क्योंकि एक क्यूब रूट है और एक स्क्वायर रूट है. So that is also not possible. Only two identical roots can be added or subtracted. Okay? Next, अगर मैं बात करूं for rules for multiplication and division. So पहला, two different roots or two different surds can be multiplied and divided. इसको हम multiply and divide कर सकते हैं. Let's see certain examples. जैसे कि √2 into √3 can be written as √6y. Again वेरिएबल जैसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम x into y xy लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग? सेकेंड एग्जाम्पल, √50 divided by √2 is equals to √25 डिवाइड हो गया 50 divided by 2 which is √25 which is again 5. बट अगर इस हिसाब से है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन √3, अब आप कहोगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल है बट बाय द लॉज ऑफ इंडाइसिस, नॉट बाय द लॉज ऑफ सर्ड्स. मैं इसको लिख सकता हूँ 3 raised to 1/3, इसको लिख सकता हूँ 3 raised to 1/2. तो ये हो गया आपका एक इंडाइसिस का सम. तो इसको हम कर सकते हैं 3 raised to 1/3 minus 2 1/2. So that gives me answer as 3 raised to minus 1/6, which can also be written as 1 upon 3 raised to 1/6. Understanding? अब what happens अगर दो same root हुए तो? Two same surds when multiplied or divide gives a rational number as answer. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट I can have √2 into √2 which is basically √4 क्योंकि मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है, and √4 is a perfect square, so that makes it 2, and 2 is a rational number. कोई भी नंबर आप ले सकते हो, √2 डिवाइड बाय √2 भी कर लो, आंसर आएगा 1, and 1 is a rational number. You can have √49 तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है. √48 into √48 gives you 48. Similarly, √101 into √101 is 101. This is basically saying कि अगर मैं किसी नंबर को स्क्वायर कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √26 का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कट, आंसर इज 26. So before actually going into the surds,
ये बेसिक फंडामेंटल्स जानना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, अभी सर्टन फॉर्मूलाज आपको सर्च या किसी चीज को हेल्प करेगा, तो वो दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेयर वी आर गोइंग टू सी हाउ to do rationalizing the denominator, and उससे पहले we will be discussing about what formulas we are going to use for the same. Thank you so much.